100 न्यूज़ में मैं तलिका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ ललित भसीन जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 100 न्यूज़ में। आपने ये पूरा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया, इसके पीछे का मकसद क्या था? इसका मकसद तो बहुत देर से हमारे दिमाग में सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स, जब हमने देखा कि हर एक लॉ फर्म में जो लेडी लॉयर्स हैं वो नंबर में ज़्यादा हैं, क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं, तो उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। तो इंडिया में तो 200 के करीब बड़ी अच्छी लॉ फर्म्स हैं, हमारी सिल्फ के मेंबर्स हैं। तो हमने एक ये ग्रुप ऑर्गेनाइज़ किया पिछले साल से, सिल्फ लेडीज़ ग्रुप, जिसमें जो लेडीज़ लॉयर जो लॉ फर्म में काम करती हैं वो सब इसकी मेंबर्स हैं। तो इसके ऊपर हमारी 2000 लेडीज़ जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। अब आइडिया यही है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनका आगे का फ्यूचर क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। क्योंकि अगर लॉ फर्म में 7 जो हैं लेडीज़ हैं और 3 मेल मेंबर्स हैं, तो उन 7 लेडी मेंबर्स का क्या प्रोग्रेस, करियर प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम इश्यूज़ क्या हैं, क्रैश हैं कि नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए। और करियर में प्रोग्रेशन क्यों नहीं होता उनका, वो लोग जजेस क्यों नहीं बन सकते, वो लोग सीनियर काउंसिल क्यों नहीं बन सकते, ये सब इश्यूज करने तो के लिए। जैसे कि आपने 2000 लोगों का जो ये पूरा टीम बनाया, जिसमें आपने इन सारी दिक्कतों को जानने की कोशिश की, तो क्या लगता है जब विमेन एज अ करियर चूज करती हैं लॉ को, तो क्यों नहीं वो सक्सेसफुल बन पाती हैं? नहीं, सक्सेसफुल बन पाती हैं कुछ परसेंटेज। जो कि आती हैं इस फील्ड में, हम्म। वो सक्सेसफुल ज़रूर बनती हैं। और क्योंकि कितनी और उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार फैमिली प्रेशर्स होते हैं कि भाई तुम नहीं, ये छोड़ दो, लॉ को छोड़ दो, शादी कर लो। अब शादी करने के बाद फिर नेचुरली मदर्स बनती हैं, और फिर बच्चों का ख्याल करना पड़ता है, अपने हस्बैंड का ख्याल, अपने इन लॉज का ख्याल रखना पड़ता है। तो किस तरीके से वो अपना टाइम जो है वो प्रोफेशन में और ये केयर में, जो केयर वो करती हैं, उसके लिए कैसे उनको रखा जाए। तो अब पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जैसे हाई कोर्ट्स में सब जगह क्रेश वो बनाए जा रहे हैं, ताकि जो लेडी लॉयर जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ला सकें वहाँ पे और ख्याल कर सकें। पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनकी फैमिली के ऊपर बहुत होती है, और ख़ास तौर पे उनके हस्बैंड्स के ऊपर, कि वो भी थोड़ा सा जो बर्डन, जो उनकी वाइफ जो लॉयर है वो शेयर, कैसे उसको शेयर किया जाए, कैसे उसकी मदद की जाए, ताकि वो थोड़ा ये केयर के हिस्से से निकल के थोड़ा खुद के लिए और। टाइम दे हाँ, पाए। हाँ। हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन रहता है, और हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मेल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में खास करके। तो क्या लगता है ये एक कारण हो सकता है नहीं, डोमिनेटिंग? मैं कहता हूँ ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। जैसे सोलिसिटर जनरल भी कह गए, जस्टिस मिनी पुष्करना ने भी बोला कि उनमें अपना भी तो इनिशिएटिव होना चाहिए। अब जब अपना इनिशिएटिव होता है उनमें, तो फिर वो ग्लास सीलिंग को तोड़ के ऊपर आ जाती हैं। अब चीफ जस्टिस भी बनेगी फर्स्ट लेडी। अब हालांकि बहुत ज़्यादा देर पहले ये होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। पर ये तो ऐसे क्या लगता है इस तरह अपॉर्चुनिटी, के इवेंट से बदलाव आएगा? बदलाव आ रहा है, अब बदलाव आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। इससे एक अवेकनिंग आ रही है और एक रियलाइजेशन आ रही है कि भाई किस तरीके से जो हम सोसाइटी का दूसरा पार्ट है, जो आदमी मेल पीपल हैं, वो किस तरीके से फीमेल्स को हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो उनका प्रोग्रेशन बढ़े। उनका फीमेल लॉयर्स का प्रोग्रेशन बढ़ना, या फीमेल्स जनरली उनका प्रोग्रेशन बढ़ना करियर में, ये कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री जो है वो ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है अगर लेडीज़ जो हैं अपना इसमें इनपुट्स दें काफ़ी। एक आखिरी सवाल, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, उसमें से कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी जिन्होंने लॉ करके फील्ड छोड़ दिया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये उनको मैसेज है कि ये बहुत हार्ड प्रोफेशन है, ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। अगर वो तैयार हैं हार्ड लाइफ को लीड करने के लिए,
तो एक बार जब उन्होंने अपना बेस बना लिया, उसके बाद जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो ऊपर उभरते ही जाएंगे, पर इनिशियली बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। थैंक यू। Your judiciary, 35% women you see are holding judicial positions. But then we come to the High Court, this filters down only up to 13%. And then this number goes on a reducing scale. What can be the possible reasons? Are there any family compulsions or this is lack of opportunities? What is it that makes you see that if we have more than 50% girl students, why can't they be seen as judges firstly in the lower judiciary and then later on in the High Court or as senior counsel? What is it that holds them back? I think what really holds back is the fact that we have seen that many women, when they start out after their college, they are 100% there after college. But then as years roll by, we see a lot of drop rate is really high. One after the marriage and the second after having their kids. So I believe that women really need to have family support. And so that they know that when their little kids are at home, they're taken care of. Because I think that really holds many women back. And so therefore, when women are not there, they're not picked up. Because see, the situation is so, we are still waiting for our first women Chief Justice of India, who will be there in 2027. Thank God we can see one in the near future. But then I would have really wanted to have one Chief Justice of India, a woman Chief Justice of India 20 years back, not now. But yes, so women really need to come forward, and what has held them back is their maybe family situation or whatever. But women, flexible timings, they should adopt that. Take your work home, be focused about your work, and you will feel confident. See, there's one saying which I read somewhere, that antidote to fear is knowledge. So when you've read your file, you have done your research work, you're aware of what the cases are, you will feel fearless, you will feel empowered. So stay there, be there, do not give up the profession. Just being there itself really helps. And then so that when it's time for the concerned authorities to pick up, they can just know that yes, they have a lot of choice. We'll take one more question, if there's anything else. Yes, one. Good afternoon. My question is, I'll keep it brief. Please. Is there a scope for introducing regulations in terms of, as my lady said, flexible work hours, minimum wage within the litigation community, which is very irregular in terms of how the juniors have been treated? And the Honorable High Court of Delhi has also often passed directions in that sense to say that juniors should be paid enough stipend or have other benefits. My lady, I see that my lady is very supportive of the flexible work hours. Not a lot of seniors think in that way, which would be really helpful for women to stay on longer in the profession. So my lady, what is your opinion on the future and scope for regularization? The Chief Justice of India himself recently flagged this issue that as far as juniors and in fact women lawyers and others are concerned, they should be paid handsomely. So yes, that's one issue. So it's a responsibility of the various lawyers, the senior lawyers as well as the law firms to ensure that the juniors are paid well. That's one. And secondly, yes, there cannot be any legislation as such for this because see, lawyers are professionals. They are not working anywhere. It's not a job as such. But yes, as far as the seniors are concerned, it's their duty to mentor
young persons, and secondly, young persons also ensure that you're working hard on your brief so that your senior knows that you're indispensable for them. And then once you are able to create a niche for yourself, then yes, of course, money will just automatically flow. Thank you. Thank you. I think we've run out of time. Thank you, Dr. Bhasin, Madina Bhasin, SILF, for organizing this. I think it's been a very, very interesting first session, and I'm sure there's more to come. Thank you very much for joining us.